Agra looked like when Bill Clinton was here. राजकुमार जी, खुशी थी लोगों को बहुत कि बिल क्लिंटन जैसी बड़ी हस्ती आ रहे हैं आगरा में, लेकिन आगरा किस तरह का क्या माहौल था उस दिन? नहीं, एक इतने बड़े देश का राष्ट्रपति वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए ताजमहल आ रहा है, तो सबको बहुत खुशी थी। ये सबको बहुत खुशी थी किया हुआ है, सबको स्वागत किया था उन्होंने। मगर पुलिस प्रशासन ने इस सारे क्षेत्र को छावनी में रखा था। ताजमहल के पूर्वी गेट से वो आए थे तो एक भी आदमी क्या कहते नहीं था उनको, तो उन्होंने इस बात को कमेंट भी किया था, ये क्या भूतों का शहर है क्या, यहाँ कोई रहता नहीं है क्या, यहाँ पर जो है। और ये इसके बाद में ये दक्षिणी गेट है ताजमहल का, ये भी बिल्कुल क्या कहते सुनसान और एक छावनी बना हुआ था। इसके आसपास भी ताजमहल का एरिया ये सब छावनी बना हुआ था। उसके बाद में ये वेस्टर्न गेट है, उधर भी यही हाल था पुलिस प्रशासन का। यहाँ जितने भी मकान दुकान आपको दिखाई दे रहे हैं सब बंद थे। फिर प्रशासन ने क्या कहते 100 से आदमियों को खड़ा करके एक लाइन में ये ताजमहल के ईस्टर्न गेट पे उनको खड़ा किया। और जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल इससे खड़े हुए थे कि एक आर्टिफिशियल की तरह, बिल्कुल जैसे कोई फौज के आदमी खड़े थे, बिल्कुल हाथ हिलाए दिए थे तो कुछ, तो आदमी समझ तो आता ही है कि उन्होंने अभी ला के खड़ा किया जो अगर। बल्कि इनको तो ये चाहिए था कि अपने देश के आदमी को दिखाना चाहिए था, स्वागत करने के लिए तैयार थे हुए। हमने चीन के चावल लाई भी आए थे सन उसमें क्या कहते हैं 58 में आ गए हुए। हमने बिल्कुल नज़दीक से उनको देखा था ताजमहल के अंदर, बिल्कुल जिस तरह हम आप खड़े हुए थे उनको देखा था। तो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ओबामा के लिए तो इससे ज़्यादा सख्त सुरक्षा है? हाँ, वो उसका कारण भी हम वो समझते हैं कि 2001 से लेकर और 2015 में स्थिति बदल चुकी है, तो प्रशासन की मर्जी हो जाती है और बहुत जा सकती है। ताजमहल से कम 1000 मीटर की दूरी पर बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ, ये काम भी दिखाई दे रहा होगा। Do you think President Obama is going to enjoy his trip to the Taj Mahal? Without a doubt, the beauty will just take his breath away. I'm sure they've never seen anything like this in the world. I think our president and the first family will be amazed at the magnificent beauty of the Taj Mahal. I think he should really see the story behind it. That's more important, which touches your heart. It really makes you cry. बहुत ही गर्व की बात है, कुछ सेलिब्रिटीज हमारे आगरा शहर महाराष्ट्र और आगरा शहर के लिए गौरव की बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, जो ओबामा जी के लिए खास जो फील्ड बनाई है वो टोटली स्पेशल है। आप तब भी यहाँ पे थे जब बिल क्लिंटन आए थे? क्या इसी तरह की तैयारियां थी? इतनी नहीं थी उनके टाइम में जो इनकी हो रही है, उनके बहुत ज्यादा हो रही है, उनकी नहीं थी। The city of Agra has turned into a virtual fortress. A 40-member strong team from the US has been in the city since Tuesday, working in tandem with the authorities, especially the security forces, to sanitize Agra. There are troops not just on the ground around the Taj Mahal, but also security personnel patrolling the Yamuna. About 100 American security personnel, along with their 4,000 Indian counterparts, will ensure a protective cover to President Barack Obama and Michelle when they visit the Taj Mahal on the 27th. The monument will be made exclusively available to President Obama. Blend of the local police forces as well as the central forces. There must be already a lot of intelligence teams there, including US advanced teams deployed. The security cover will involve an intense ground-to-air paraphernalia to ensure that there is no untoward incident during the visit of the world's most guarded leader. Special security personnel and sharpshooters will be placed in high-rises in Agra. An advanced team of the US President's security has been camping here and is visiting the Taj Mahal daily to fine-tune the security details in coordination with local police officials. CCTV cameras are being installed along the route from Keria Airport to Taj Mahal, a distance of about 11 kilometers. Most probably what will happen is that the president will fly in there, keep his exposure to public areas to the minimum, and after seeing the Taj, he will fly back. Reports also say if it is foggy, the 165-kilometer expressway from Delhi to Agra could be made off limits to the public so that the presidential convoy can be used if needed. A picture on the famous marble bench inside the Taj Mahal makes for a perfect finish to a wonderful trip to the Monument of Love. But one such image evoked
a starkly different response, that of Lady Diana sitting alone on the bench. It sparked rumors of a royal rift. And even though her visit may have had a hint of sadness attached to it, most others leave the Taj with their hearts filled with love for India. The white marble pearl of architecture was once described by poet Rabindranath Tagore as a teardrop on the cheek of eternity. Like love and tears, it cannot be captured in mere words. Taj Mahal, the Mughal Emperor Shah Jahan's timeless memorial to his wife Mumtaz Mahal. Built to immortalize the memory of his lost love, the monument today is popularly known as a symbol of eternal love. Over the years, this 17th century monument has beckoned many world leaders and state guests to walk under these archways and marvel at its brilliance. US President Dwight D. Eisenhower visited the monument in 1959 with the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Queen Elizabeth II visited the Taj Mahal in 1961, while Jacqueline Kennedy, wife of US President John F. Kennedy, was a guest at the Taj in 1962. This classic shot of Diana, the Princess of Wales, was taken during a visit to India in February 1992 and featured on numerous newspaper front pages the following day. Bill Clinton was another US president who came to see the Monument of Love in 2000 along with his daughter Chelsea. Russian President Vladimir Putin also visited the Taj in 2000. During the Agra summit in 2001, the then Pakistan President Pervez Musharraf visited the Taj along with his wife Sehba. Chinese President Hu Jintao visited the monument in 2006. French President Nicolas Sarkozy made his first visit to the Taj Mahal in 2008 and came again with his wife Carla Bruni in 2010. The marble bench, now famous as Lady Di's chair, is ready to host its next occupant, Barack and Michelle Obama. We are bidding goodbye to Agra and this beautiful Monument of Love behind us.